अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पूरे स्थापित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करती हूँ। सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। करीब 85 मिनट लंबे भाषण के बाद निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी अहम घोषणाएं की है। इस बजट में बहुत सी चीजें सस्ती हुई, खासकर वो जो जीवन रक्षक दवाएं कैंसर से जुड़ी हुई उससे जुड़ा सामान जो है उसको सस्ता होने का ऐलान हुआ है। जो कंप्यूटिंग की क्लाउड कंप्यूटिंग की Incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities and even temple towns which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth while safeguarding financial stability, inclusion and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate
corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built.
A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work
pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dholavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels.
B. Systematic development of coaches and support staff. C. Integration of sports science and technology. D. Competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E. Development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A. A credit-linked subsidy program. B. Scaling up and modernization of livestock enterprises. C. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry. I'll read that again. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains. And D. Encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals
and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission,
I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with.
I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings.
There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax. जीएसटी हटाने के बाद 212 की बेचता था जीएसटी लगा करके, जीएसटी हटाने के बाद उसको वो 216 की बेचनी पड़ेगी सेम अमाउंट ऑफ अर्निंग करने के लिए। तो कहने के लिए तो जीएसटी रिफॉर्म थे वो, जिसमें हमने एंड प्रोडक्ट पर जीएसटी हटा दिया पर रॉ मटेरियल बढ़ा दिया, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी कोई रिफॉर्म नहीं थे। वहां पर भी जनता की मिडिल क्लास की गर्दन ही दबाई गई, चाहे हम क्लोथिंग सेक्टर की बात करें, चाहे हम बुक्स की बात करें, मतलब कागज की बात करें, तो सारे सेक्टर जो आम आदमी यूज करता है उनमें तो कैलाश विजयवर्गीय जी ही मिले हैं। बाकी उद्योगपतियों के लिए सरकार लगातार काम करती रही है। इस बार शायद आपने अनुराग भदौरिया ने और आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। राजीव रंजन मुझे दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। राजीव जी, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष की बात का भी आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है कि एकदम से जो शेयर मार्केट ने रिएक्ट किया, जो सबसे पहले त्वरित रिएक्शन आता है, वो बड़ा डिस्करेजिंग सा लगा इनिशियली। आपको भी झटका लगा था क्या? अब देखिए, नहीं, झटका तो आमतौर पर शेयर बाजार से जो बजट को लेकर के एक राय बनती है, वो कहीं ना कहीं एक बड़े संकेतक के तौर पर तो हम देखते रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं बाजार रिकवर कर रहा है और जो 2300 के आसपास में वो गिरावट देखी गई, वो अब घट करके 800 हुआ है ये, और अब तो ये 631 पॉइंट है नीचे। तो मुझे लगता है कि ये बाजार शाम तक रिकवर करेगा। और ये अभी एक अर्थशास्त्री ने कहा भी कि पीडीएफ जब हम डाउनलोड करेंगे और मसौदे का अध्ययन करेंगे तो बेहतर तरीके से कई तरह की आशंकाओं और संभावनाओं का निराकरण करने में सहूलियत होगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उनसे बोलिए कि जो चुनौतियां हैं, इकोनॉमिक आकलन नहीं होता है। बोलने दीजिए ना, आपने बोला कोई होगा ना, आपको सुनने, आपके साथ ना आप सुनते नहीं किसी को, अपनी कहने आते हैं। सुन लीजिए ना, तब से बारी का इंतजार कर रहे थे राजीव जी, आपने अपनी बात कह दी। 3 आदमी हमला कर रहा है सरकार पे, जीडीपी पक्ष तो सुन लीजिए उनका। जी बोलिए राजीव जी, बोलिए। जीडीपी और कर्ज का अनुपात, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है और उसको नियंत्रित करने के लिए जो स्वरूप दिख रहा है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो उत्साहवर्धक है। और एक जब फ्यूचरिस्टिक बजट आप लेकर के आते हैं, मिशन 2047 की बात, जब आप विजन 2047 की बात करते हैं, तो हर बार केवल लोक लुभावन जो फैसले हैं उनके समावेश से जो वैश्विक चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को हम अवसर में कैसे बदलें, ये संकल्प इस बजट में दिख रहा है। अब मैं एक दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण है जी, जल्दी से। आपका लघु जो मध्यम उद्योग का क्षेत्र है, उसमें जिस तरीके का निवेश हो रहा है, कैपेक्स को लेकर के भी कई तरह की चुनौतियां हैं। पूंजीगत जो वृद्धि को लेकर के हमारी अपेक्षाएं हैं, बजट उस पर खरा उतरता हुआ दिख रहा है। बिहार जैसे राज्य को लेकर के हम ये कह सकते हैं, जब चुनाव को लेकर के जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां भी कोई ऐसी रियायतें नहीं दी गई हैं जिनको कहें कि चुनाव को ध्यान में रख करके पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु जी, तो वैसी स्थिति में बिहार को अगर रेल ये जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के जरिए जो वाराणसी सिलीगुड़ी का जो आपका कॉरिडोर है, उसकी वजह से आधारभूत संरचना के विस्तार में मदद मिलेगी। ठीक है राजीव जी, मैं लौटता हूं और मेहमान भी मेरे साथ है। वक्त की थोड़ी कंस्ट्रेंट है, वो ध्यान में रखना चाहिए। जाहिर तौर पर जब आप कोई ट्रेन चलेगी यूपी से असम के लिए, तो बगैर बिहार के कैसे जाएगी? तो आपका राज्य को तो फायदा होना ही होना है। अब ऐसी जगह पर आपका राज्य स्थापित है इस वक्त पे। अब बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, दिल्ली और बंगाल की दूरी अगर कम हो रही है, घट रही, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो फायदा तो बिहार को हो गई। सुशील अग्रवाल जी, डॉक्टर सुशील अग्रवाल स्क्रीन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके पेशेंस के लिए शुक्रिया। आप चेयरमैन रह चुके हैं CII के, आप MSME सेक्टर के बहुत बड़े नाम है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, सरकार कह रही है बहुत अच्छा बजट है। मैं इन दोनों इतर बयानों से दूर, राजनीति से दूर आपसे पूछना चाहता हूं, आम हिंदुस्तानी के लिए, खासकर MSME सेक्टर के लिए इस बजट से कैसा लगा आपको, और कितने नंबर देंगे आप? यहां से शुरू करिए 10 में से। हाँ, सुमित जी, मेरा दिल कर रहा है कि पहले तो ताली बजा दूं।
क्योंकि जिस प्रकार का बजट मैम ने पेश किया है, मुझे नहीं लगता कि इतने सालों में मैंने इतना कोहेसिव बजट जहां हर चीज पे ध्यान दिया गया हो। हाँ, नो डाउट, जब सबको पॉपुलिस्ट मेजर में हर एक को खुश करना होता है तो सेक्टरली कहीं ना कहीं चैलेंज आ जाता है। जैसे एमएसएमई में उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया, माइक्रो के लिए 2,000 करोड़ का एलोकेशन किया। ये बहुत छोटा अमाउंट है, क्योंकि आज इतने 30 करोड़ से ज्यादा लोग भारतीय जो है मिडिल क्लास फैमिली जितने भी हैं वो डिपेंडेंट है एमएसएमई पे, और हमारी एमएसएमई इस समय चरमराई हुई है बिकॉज ऑफ लेट्स से हायर इंटरेस्ट रेट। स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज भी देती हैं तो बैंक रेट से 2% ज्यादा ही चार्ज करती है, कोई कैपिटल सब्सिडी उन लोगों को नहीं मिलती है, कोई किसी प्रकार का जो फिस्कल बेनिफिट होता मिलता नहीं है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि भी आज मैम ने जैसे कहा कि 4.5 का फिस्कल डेफिसिट था उसको 4.4 करने जा रहे हैं, विच इज गुड फॉर द नेशन, क्योंकि अगर जो टैक्स बायंसी होगी हमारे पर रेवेन्यू ज्यादा आएगा, एक्सपेंडिचर्स कम होगा और फिस्कल डेफिसिट ठीक होगा तो अपने को एक्सपेंडिचर करने के लिए बहुत ईजी होगा। और जिस प्रकार से उन्होंने कनेक्टिविटी का ऐलान किया सारी सब जगह से, मैं ये मान के चलता हूँ टीयर 2-3 सिटी के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है, एम्फेसिस है जो कभी भी नहीं किया गया था। ये बहुत जरूरी है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो यूथ जो है जो आज शहरों में आकर के परेशान हो रहा है, शायद वो अपने गांव में या अपने शहरों में बहुत सारे उद्यम बिजनेस कर सकेंगे। साथ साथ 2 मिलियन 20 लाख लोगों को जो स्किल सेट एआई के अंदर कंटेंट राइटिंग के सब जो दिया गया है, ये टोटली नया चैप्टर है, कभी ऐसा सुना ही नहीं कि सरकार भी कोई होता है। तो जो गवर्नमेंट कर रही है उसने हर छोटी छोटी चीज पे भी ध्यान दिया है। तो डॉक्टर अग्रवाल, आपकी बात सुनकर तो लग रहा है कि आप 10 में से 11 नंबर दे रहे हैं। सुमित जी देखिए, ऐसा आप देखिए, आप देखो इंटरेस्टिंग बात देखिए, आप स्टॉक मार्केट को हम लोग पैरामीटर मानते हैं, इस हम नहीं मानते। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। आप कोई और मानता होगा जो इन्वेस्ट करता है, हम लोग के पास है नहीं लगाने के लिए। देखो सुमित जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 0.15 से 0.50 अगर जो एसटीटी कर दिया उतने में लोग अपना धराशय हो गए, विच इज नॉट एक्चुअली एडवाइजेबल। हमारे मैक्रो पैरामीटर्स और माइक्रो पैरामीटर्स बहुत ही इंटैक्ट चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता दूर दूर तक कहीं पे भी किसी प्रकार से हमारी इकोनॉमी पे कोई फर्क करना, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ चल रही है। आपने नंबर नहीं दिया डॉक्टर साहब, एक बार नंबर दे दीजिए ना, मैं आगे बढ़ूंगा। फिर 10 में से कितने? मैं 10 में से 10 तो नहीं कर, लेकिन 10 में से 8 जरूर कह सकता हूँ। 8 दे रहे हैं आप, चलिए ठीक है। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता है, यंग, फायरी और आर्टिकुलेटिव। या सिद्धार्थ, आप शायद गाड़ी में है, मैं आपको देख पा रहा हूं। यहां पर सवाल खड़े किए विपक्ष ने, जो कि विपक्ष ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, जो उम्मीदें थी कुछ भी नहीं हुआ, शेयर मार्केट गिर गया, तमाम इस तरह के तर्क दिए गए। बीजेपी की तरफ से बचाव में क्या कहा जाएगा? देखिए सुमित जी, विपक्ष का अपना एक काम है और हम लंबे समय से देखते हैं कि विपक्ष उस काम में जिम्मेदारी का जो बोध है उसको भी छोड़ चुका है। जब देश के अंदर सबसे बड़ा टैक्स रिलीफ दिया गया था तब भी विपक्ष ने यही कहा था कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। पिछले 10 सालों के अंदर 9 लाख से ऊपर का टैक्स बेनिफिट दे दिया गया है, विपक्ष तो फिर भी कहता है कि कुछ भी नहीं है। देखिए, बजट देश की आर्थिक स्थिति, देश की जो ग्रोथ, किस पड़ाव पर देश खड़ा है और उस समय की क्या आवश्यकता है उसका एक परिचय होना चाहिए, और वही इस बार का हमारा बजट भी है। जितने सेक्टर्स को इस बजट में टच किया गया है, जितने सेक्टर्स के लिए रिलीफ किया गया है और जितने माइक्रो लेवल तक जाकर के इस बजट में मैनेजमेंट की गई है, मुझे लगता है कि वो बहुत सराहनीय है। विपक्ष को भी राजनीति से ऊपर उठ के जो वास्तव में बेनिफिट की चीजें हैं, चाहे फिर वो एमएसएमई सेक्टर के लिए हो, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने को लेकर के हो, हमारे देश का आज तक का सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बजट में अनाउंस हुआ और देश का विपक्ष कह रहा है कि वो इससे निराश है। तो मुझे नहीं समझ में आता उनकी आशा किस बात पे थी। जब वो बजट पेश किया करते थे क्या था कैपेक्स, आज हम 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हम देश के अंदर, देश में बुनियादी सुविधाएं बनाने का, देश के अंदर व्यवस्थाएं बनाने का इतना बड़ा सरकार परियोजना साल दर साल बढ़ाती जा रही है। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण वो बातें हैं जो देखना चाहिए। अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, नए हेल्थ केयर का क्षेत्र हो, नए इंस्टीट्यूट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट्स को सेटअप करना, देश के बजट के अंदर। बिल्कुल सिद्धार्थ, और मैं निमन को लेके आना चाहूंगा इस चर्चा में। निमन, आप मुस्कुरा रहे हैं, पंजाब में भी चुनाव है भाई अगले साल, आपकी सरकार वहां पर है। सरकार का जो जितना मैं समझ पाया वो वाराणसी, सिलीगुड़ी, सिलचर, तमिलनाडु, हैदराबाद, मद्रास, ये सब तो दिखाई दे रहा था। आपकी कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, देखिए, शिकायत तो वहां की जाती है जहां से कोई एक्सपेक्टेशन हो। हमें इनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, ये पूरे देश में जो है वो पैसे बांटते थे और दिल्ली को कितने देते थे? 325 करोड़ रुपए। हमारे जीएसटी का पैसा ही, हमें टैक्स का पैसा ही नहीं देते थे ये लोग। तो ये सरकार से एक्सपेक्टेशन ना आम आदमी पार्टी को है ना आम आदमी को है। पिछले 11 साल में सरकार ने एक भी वादे पे डिलीवर नहीं किया। मैं तो बजट को बहुत सिंपल तरीके से देखता हूँ। आम जनता क्या देखती है? आम जनता ये देखती है कि बाजार में कितना पैसा आया,
कितना पैसा खर्च करने के लिए उन्हें मिला और कितनी इकोनॉमी जो है वो रोटेट हुई, सर्कल कितना बड़ा। बस ये तो बड़े सिंपल सा बजट है। आप ये बता दीजिए कि पेट्रोल कहीं सस्ता हुआ, कहीं पर गैस सस्ता हुआ, कहीं पर लोगों की जेब में पैसा आया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 96% गिर गई हमारे देश में। आज फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में विश्वास नहीं जता रहे हैं कि वो यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो उनका पैसा बचेगा। सरकार चलिए, आपने कुछ सवाल पूछे। सीएनजी सस्ती होगी, बायोगैस सस्ती होगी, कपड़े सस्ते होंगे, लेदर प्रोडक्ट सस्ते होंगे, स्मार्ट सिटी बनेंगे, ये आम जरूरती की चीजें हैं कि नहीं है? सुनिए सर, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, मेक इन इंडिया होगा, स्वच्छ भारत होगा, ये तो बहुत सुन चुके हैं हम। कितने स्मार्ट सिटी बने आज पूछ लीजिए, 11 साल हो गए। आप कम से कम आज तो पूछ लो कि एक स्मार्ट सिटी बना दिया क्या इन लोगों ने? स्वच्छ भारत में किसी एक शहर को इन्होंने स्वच्छ कर दिया क्या? आज आप फॉरेन इन्वेस्टर को तो छोड़ दीजिए सर, आज हमारे देश के इन्वेस्टर्स हमारे देश में इन्वेस्ट करके खुश नहीं है। 2 लाख करोड़ रुपए हमारे देश से बाहर जा रहे हैं और आ रहे हैं पता कितने? केवल 9,000 करोड़ रुपए। ये रियलिटी है आज। सिद्धार्थ, आज आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को सिद्धार्थ जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी पहले शास्त्री जाता हूं आपके पास। सिद्धार्थ, मुझे बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो दिल्ली वाली शराब घोटाले की मदहोशी थी वो भी आम आदमी पार्टी से दूर गई नहीं है, और उसी मदहोशी में वो बजट को भी एनालाइज करने का काम कर रहे हैं। बजट का एनालाइज करना गंभीरता का विषय। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप सुनिए ना, ये बजट की चर्चा है, आप क्यों उसमें उत्तेजित हो रहे हैं? बजट को एनालाइज करना एक गंभीरता का विषय है। अब आपको लगता है कि देश के बजट में पेट्रोल डीजल सस्ता होता होगा, तो अब मेरे को नहीं पता कि आपकी डायनेमिक प्राइसिंग को लेकर के क्या समझ है क्या समझ नहीं है। मतलब बजट को लेकर के आप ये कह रहे हैं कि इसमें पेट्रोल डीजल सस्ता, मतलब मैं क्या कहूं इस बात पे सुमित जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर देश के अंदर जिस प्रकार का एक डिलीवरी की जा रही है, अब वो कह रहे हैं कि जो बातें हमने सुनी थी वो कभी पूरी नहीं हुई। मैं आपके बीच में नहीं बोला। निमन, आई रिक्वेस्ट यू, निमन, शास्त्री जी मैं आ रहा हूं। निमन, हाथ उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास। हैव पेशेंस, बाकी सभी पेशेंस कर रहे हैं। सिद्धार्थ की बात, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं वो। अगर आप संतुष्ट नहीं है, हाथ उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास। सिद्धार्थ, कंप्लीट करिए। देखिए, आज ही देश की वित्त मंत्री ने कहा, हमने 2021-22 के बजट में कहा था कि हमको हमारे देश का फिजिकल डेफिसिट जीडीपी के 5% से नीचे लाना है। वी हैव डिलीवर्ड 4.4%। उसकी प्रोजेक्शन अगले साल की 4.3% है। हमारे देश का ग्रोथ रेट आज जिस प्रकार पे चल रहा है, फिजिकल डेफिसिट का जो रेशियो है और देश में इन्फ्लेशन का जो रेशियो है, वो इकोनॉमिक बैरोमीटर्स नहीं है। ये बात आप नहीं समझ पाएंगे। मेरे को लगता है कि आंखें बंद हो तो बात खोली जाए, पर अगर कोई जान करके सोने की एक्टिंग कर रहा हो सुमित जी, उसको मैं शास्त्री जी के पास जाऊंगा। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री, आपकी बारी नहीं आ पाई अब तक, माफी चाहता हूं, आपके पेशेंस के लिए शुक्रिया। शास्त्री जी, कितने नंबर देंगे 10 में से और क्यों? एक्चुअली मैं इस बजट से नहीं, बजट की जिस तरीके से ये पेश किया गया है, क्योंकि ये टाइम नहीं था हमारा ऊपर, डिफेंस एंड डिप्लोमेसी सरोबरी थी, जो जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स चल रही थी और ट्रेड डील्स बीच में थे, इस टाइम पर इनको वोट ऑन अकाउंट ऑप्टिमम करना चाहिए था। जून तक इनको टाल देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस का एग्जम्पशन कर रहे हो सारा, इनका कोई फायदा नहीं होगा। किस तरीके से पूरा जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, डिफेंस एंड डिप्लोमेसी के अंदर आप लोग अनप्लान्ड लेआउट, जिस तरीके से खरीदारी की सोच रहे हैं, जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री सोच रही है, so as an integrated economist I can say this is not the right time to present a budget, and this is not the time. I think Ms. Nirmala Sitharaman not able to understand what is exactly the scenario, outside scenario, because 3.8 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी हमारा हिंदुस्तान का है। इस हिंदुस्तान की 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हो गया। हम आपकी ये रूपी, आपकी रिजर्व बैंक किस तरीके से रिजर्व बैंक को निर्देश देना चाहिए था, किस तरीके से आप किस तरीके से कंट्रोल किया जाए रुपये को, ये इस तरीके से बहुत बातें हैं जो मुझे आई थिंक ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज डूइंग वेल, देयर इज नो डाउट, बट दिस इज नॉट द टाइम टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल इश्यूज। तो हाउ मेनी मार्क्स यू विल गिव, कितने नंबर देंगे आउट ऑफ 10 इस बजट को देखने के बाद? मैं तो मार्क भी नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं एग्जाम में बैठे ही क्यों? एग्जाम में बैठने नहीं चाहिए था, अगले साल का परीक्षा अगले साल का वेट करना चाहिए था। नहीं मिस्टर सुमित, आई मस्ट टेल यू, प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी शास्त्र गिर जाए उसको उठा सकते हैं, अर्थशास्त्र गिर जाएगा तो कोई नहीं उठा सकता है।
ये याद रखना, चाहे कोई नहीं तो भी आग हो। भी तो नहीं मूंद सकते हैं ना, आपको तैयारी तो करना पड़ेगा ना। बजट जो ना जिस तरीके से बजट आप लोगों ने बनाया, इनकम एंड रेवेन्यू का डिफरेंस तक नहीं पता है बहुत लोगों को। इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि अगर आप अभी बजट नहीं पेश करते, वोटर अकाउंट के लिए आप जून जुलाई तक जाते, तो सिचुएशन जियोपॉलिटिक्स में चेंज हो गई होती। इसकी गारंटी क्या है? जिस तरीके से ट्रम्प साहब रिएक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड द ट्रूथ। नो प्लीज मिस्टर सुमित, प्लीज, यू आर एक्सपर्ट ऑफ योर एंकरिंग, आई एम एक्सपर्ट ऑफ माय इकोनॉमिक्स बिकॉज आई एम इंटीग्रेटेड इकोनॉमिस्ट. So please understand, this is not the time because I need to look after the entire 140 crores population. अच्छा ठीक है, 140 crores population की दायित्व ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज हमारा हिंदुस्तान मैक्सिमाइजेशन में जीता रहा, मैं ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ध्यान देता हूँ. ऑप्टिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन में बहुत ज्यादा फर्क है. ये जो जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने 1947 लव स्टोरी में मैक्सिमाइजेशन को सुना था, उसको मैं चैलेंज करता हूं. ऑप्टिमाइजेशन, नरेंद्र मोदी ने ऑप्टिमाइजेशन को सुना है, उसके साथ देता हूं, लेकिन इस टाइम पर थोड़ा सा उनको संयम रखना चाहिए था. प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा बिजी है, ही इज ऑन डिफेंस एंड डिप्लोमेसी में. मतलब आपकी बात कितना लोगों के गले उतरेगी मुझे नहीं पता, पर हम लोग डेमोक्रेसी में आपको अपनी बात करने का पूरा अधिकार है शास्त्री जी, एंड आई एम नोबडी, बट मैं आपकी बात से मुतमईन नहीं हूं इंडिविजुअली स्पीकिंग. लेकिन खैर मैं आगे सबके पास चलूंगा. अश्विनी जी हाथ उठा रहे हैं. अश्विनी जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, पहले आप बोल लीजिए. चलिए. मैं सिद्धार्थ जी से सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं, हालांकि वो चले गए, मुझे लगता है यहाँ पर है नहीं. बहुत सिंपल सी बात है, 2014 तक देश का जो बॉटम 50% था उसके पास करीब 24% वेल्थ थी, एंड जो बॉटम 90% था उसकी जो कंबाइंड वेल्थ हुआ करती थी वो करीब 60-65% करीब हुआ करती थी, 60% करीब. अभी वो वेल्थ जो है करीब 45% पे आ गई है. जो टॉप 10% थे उनके पास 45% वेल्थ थी, 56% हो गई है. सरकार को ये के शेप इकोनॉमी बन रही है. बजट में ये फोकस होना चाहिए कि गरीब आम आदमी 90% जो डिप्राइव्ड है उनके लिए बजट आए. ऐसे कौन से इस बजट में उन्होंने काम किए हैं जिससे वो जो गैप है वो बढ़ने की जगह कम होने वाला है, जो मुझे कोई कहीं नजर नहीं आ रहा. रही बात, सिद्धार्थ बार बार बोल रहे थे कि कैपेक्स बढ़ा दी, कैपेक्स बढ़ा दी. अरे साहब, आपने डॉलर इतना तेज कर दिया है कि आप घर बैठे बैठे आपकी कैपेक्स बढ़ जाएगी, क्योंकि आप कैपेक्स गिनाओगे रुपीज में, और डॉलर में तो कैपेक्स कम ही रहती है, क्योंकि आपका डॉलर इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि आप ये भी नैरेटिव बना रहे हैं कि यूट्यूबर्स जो है आज ज्यादा पैसे कमा रहे हैं क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है. हकीकत यह है कि रुपए गिर रहा है, इकोनॉमी गिर रही है, गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, और उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है. सिर्फ और सिर्फ बजट का लोक लुभावना बना करके उद्योगपतियों के लिए कहीं ना कहीं एक संयोजित तरीके से काम किया जा रहा है. ठीक है. उत्पल चौधरी, क्या आप इस बात से मानेंगे जो बात एलिगेशन कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि देखिए, मैं सिद्धार्थ से रिएक्शन लूंगा. सिद्धार्थ के वहां शायद कनेक्शन चेंज हुआ है. मैं आपने बीजेपी से सवाल पूछा, मैं लूंगा आपके सवाल का जवाब, लेकिन एक्सपर्ट से भी पूछ लेना चाहिए कि जैसे आप सोच रहे हैं उसमें कितना दम है. नहीं, कैपेक्स का डॉलर से कोई मतलब ही नहीं है. कैपेक्स में इंडिया में खर्च होना है, डॉलर बाहर की चीज है, वो उससे कोई मतलब नहीं है. और प्लस जो है इसमें बढ़ाया गया है, हालांकि थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद थी कि ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन 12,20,000 करोड़ किया गया है, तो ये मतलब बेहतर है. क्योंकि अगर हम देखें कि 24 वाले इसमें जो कैपेक्स के लिए जो पैसा रखे गए थे उसमें से अक्टूबर के बाद से थोड़ा कमी कर दिया गया था. 70,000 के आसपास जो है करोड़ के आसपास खर्च हो रहा था, जबकि 1,10,000 करोड़ के आसपास खर्च होना था. उसके बाद से थोड़ा सा जीडीपी में असर पड़ा था. इस बार जो है इसने फिर उस तरीके से खर्च किया है, तो जो जीडीपी की जो बात आ रही है 7% के आसपास, वो रिफ्लेक्ट होने लगा है. तो कैपेक्स पे जो इस बार बढ़ाया गया है तो वो जीडीपी पे कहीं ना कहीं जो है वो उसको बढ़ाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन एक बात हम यहाँ कहना चाहेंगे जो बड़ी शानदार चीज हुआ है कि रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर, रेयर अर्थ में ऐसा है कि भारत जो है वो नंबर 3 पे है. पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे ब्राजील है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है. लेकिन प्रोडक्शन में जो है हम 7वें नंबर पे हैं, क्योंकि हम उस तरह से प्रोड्यूस नहीं करते हैं. और रेयर अर्थ का ये इसमें इस्तेमाल है कि सारे डिफेंस के इक्विपमेंट से लेकर एआई से लेकर तमाम जगह उसका इस्तेमाल है. क्योंकि अगर जिस तरह से चाइना का मोनोपोली हो गया, 93% प्रोसेसिंग है उसके रेयर अर्थ में, उसने मैग्नेट देना बंद कर दिया था तो गाड़ियां बननी बंद हो जाती है. या फिर जिस तरीके से उसने ट्रंप को घुटने पे लाया साउथ कोरिया में, तो वो एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है. और हमारे पास उसके बड़े जबरदस्त रिसोर्सेस हैं, लगभग 7 मिलियन जो है टन, मैट्रिक टन जो है वो पड़े हुए हैं रिसोर्सेस. तो उसमें जो अगर खर्च होगा और उसको फिर लाया जाएगा तो वो एक बड़ा कदम होगा, और जो आने वाले समय में ये काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा. रेयर अर्थ पे जो फोकस है सरकार का, उसका अप्रिशिएट कर रहे हैं. सिद्धार्थ यादव, अब जवाब दीजिए अश्विनी जी की बात का. देखिए सुमित जी, जिस बॉटम और हायर स्ट्रेटा की बात अश्विनी जी कर रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस बात को भी डिनाई नहीं करेंगे कि हमारी सरकार के प्रयासों के बाद ही
वो डेफिनेशंस भी बदली हैं। अगर 25 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से ऊपर आ पाए हैं तो सरकार के प्रयासों से ही आ पाए, पर जिस अंडरस्टैंडिंग को वो लेना चाह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कठिनाई कहाँ आ रही है। अगर 12,20,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार करने को तैयार है तो आपको क्या लगता है वो सरकार कहाँ पैसा खर्चा होगा? क्या वो किस डेटा को मिलेगा वो पैसा? क्या हमारी इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन उसके बाद नहीं बढ़ेगा? क्या व्यवस्थाएं जब बनेंगी तो लोगों को जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा? क्या लोगों को उससे जो रोजगार सर्जित होगा उनकी जेब में उससे पैसा नहीं आएगा? ये पहली बात है। दूसरी बात, मैं फिर से दोहराता हूं, हर बजट सरकार और देश किस पड़ाव पर है उसकी उस चीज को एड्रेस करने के लिए लाया जाता है। मैं 2026 के अंदर जो भारत की नीड्स हैं, जो भारत को आवश्यक है। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं 1 मिनट के लिए। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी हमारे पास आई है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। हमारे सहयोगी रंजीता रंजन ने अखिलेश यादव के साथ खास बातचीत की है, वो इस पर क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री की भी प्रतिक्रिया किसी वक्त भी आ सकती है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के तुरंत बाद लौट के आते हैं। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया, ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं, बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। Incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and an end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector.
The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and